the perivisceral coelom and replace it by such irregular space called the sinuses. The sinuses join together to form the body cavity, which is filled with hemolymph and into which all the visceral organs lie. Thus, the body cavity itself is a part of circulatory system and therefore it is called the hemocoel. Hem means blood, coel means cavity. In cockroach, the hemocoel extend from anterior end of the body to the posterior end. The hemocoel lack epithelium of true coelom and is divided into three bigger sinuses by two horizontal septa. The septa are muscular membranous structure. One is called the dorsal diaphragm and the other is called the ventral diaphragm. It is by these two diaphragm or septum or separation that the body cavity or the hemocoel is divided into three sinuses. The sinus or the open space that is present on the dorsal portion of the body is called the perivisceral sinus. The perivisceral sinus is separated from the heart by dorsal diaphragm. On the ventral surface, the hemocoel or the sinus is called the perineural sinus. It is separated from the heart by ventral diaphragm. The heart itself is enclosed in a sinus which is known as the pericardial sinus. Thus, there are three bigger sinuses. The sinus are upper dorsal sinus or pericardial sinus enclosing the heart, the perivisceral sinus lodging various visceral organ, and ventral sinus is called the ventral perineural sinus or sternal sinus, which enclose the ventral nerve cord. Both the diaphragms are perforated so that the three sinus remain in communication with each other. This is the diagram. Attached to dorsal diaphragm is a series of paired alari muscles. These muscles are triangular in shape and their pointed outer end are inserted into the targa. Heart is an elongated tube. Muscular wall lying mid-dorsally beneath the targa of the thorax and abdomen. It consists of 13 segmentally arranged funnel-shaped chamber. At the lateral side of each chamber is a pair of ostia. Ostia means the opening, one on each side. The ostia are guarded by valves which allow the blood to only enter the heart. The heart is made up of single layer of cells having striated muscles. The cells are lined both outside and inside by a delicate membrane. The first chamber of the heart is continued anteriorly into an anterior aorta.
which open into the hemocoel of the head. The aliary muscles are 12 pairs whose alternate contraction and relaxation causes the dorsal diaphragm ventricular to raise and fall, and so the blood flow from perivisceral sinus to pericardial sinus and finally into the heart as it beats. The muscular wall of the heart contract in a wave from behind to forward, and the blood is forced into anterior aorta, from where it re-enters the hemocoel and goes slowly to the organ and appendages, including the wings. In cockroach, there is an accessory pulsatile vesicle at the base of each antenna, which also pumps the blood. This is the diagram which shows that how the blood flow from behind to forward towards the anterior end. There are valves present on both the side of the ostia which opens and close, causing the blood to flow or not to flow. The hemolymph is the circulatory media in cockroach. It has colorless plasma and many corpuscles called the hemocyte. No respiratory pigment is found in it. Hence, it does not help in the transport of respiratory gases. Its sole function is to transport various nutrients from one part of the body to the other and to carry the nitrogenous waste substance from tissue to the organ of excretion. The plasma contains about 70% water and large number of organic molecules like free amino acid, uric acid, proteins, sugar, fat, etc. Hemocytes are of three types: the prohemocyte, transitional hemocyte, and large hemocyte. Course of circulation of the blood. The wave of contraction in heart sets from posterior end to anterior end, forces the hemolymph in the anterior aorta. From there, the blood goes into hemocoel of the head. Then it goes to the ventral and perivisceral sinus, then goes to dorsal or pericardial sinus, then goes to the heart and complete the circulation. Complete circulation of hemolymph through body takes about 30 to 60 minutes. कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है व इसमें रक्त पात्र भरे रहते हैं जिसको कि हम साइनस कहते हैं। रक्त साइनस मिलकर देह गुहा में खुलती है। रक्त बंद वाहिकाओं में नहीं बहता, इसीलिए इसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कॉकरोच में हीमोसील दो पट या सेप्टम द्वारा 3 कोटरों या साइनस
में बटी रहती है। कॉकरोच की देह गुहा को हम हीमोसील कहते हैं। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन या किसी अन्य श्वसन वर्णक का अभाव होता है, इसीलिए हीमोलिम्फ श्वसन में सहायता नहीं देता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में सहायता नहीं देता है। हीमोलिम्फ का मुख्य कार्य टिश्यूज़ तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना व नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट कर एलिमिनेट करने का काम होता है। कॉकरोच में हीमोसील 2 सेप्टम यानी पटों के द्वारा 3 साइनस या कोटर में बटी रहती है। पहली पृष्ठ पेरिकार्डियल साइनस कहलाती है, जिसमें हृदय स्थित होता है। दूसरा मध्यवर्ती पेरीविसरल साइनस और तीसरा अधर परितंत्रिकीय साइनस। पेरिकार्डियल साइनस पहला, पेरीविसरल साइनस दूसरा और पेरीन्यूरल साइनस तीसरा। इनमें से डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस तथा पेरीविसरल साइनस के मध्य एक छिद्रयुक्त डायफ्राम यानी तनुपट पाया जाता है। पेरिकार्डियल साइनस में हृदय पाया जाता है। पेरीविसरल साइनस में आहार नाल व दूसरे विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। पेरीविसरल साइनस तथा पेरीन्यूरल साइनस यानी परी आंतराक कोटर और परितंत्रिकीय कोटर के बीच एक अधर छिद्र युक्त तनुपट पाया जाता है, यानी एक वेंट्रल चेंबर पाया जाता है। परितंत्रिकीय कोटर में अधर तंत्रिका रज्जु यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। हृदय कॉकरोच के थॉरेक्स और एब्डोमेन यानी वक्ष एवं उदर खंडों की टर्गा के नीचे मध्य पृष्ठ सतह पर एक लंबी पृष्ठ रुधिरवाहिनी या हृदय पाया जाता है। यह पृष्ठ परिहृद कोटर में पाया जाता है, यानी ये जो हार्ट है ये पेरिकार्डियल साइनस में पाया जाता है। इसका अग्रसिरा, इसका मतलब हार्ट का अग्रसिरा खुला हुआ होता है तथा पश्चसिरा बंद होता है। यह कीप के आकार की, कीप यानी कि फनल के आकार की 13 प्रकोष्ठों यानी चेंबर का बना होता है। अंतिम प्रकोष्ठ को छोड़कर शेष सभी प्रकोष्ठों के पश्च भाग में एक जोड़ी छिद्र पाई जाती है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ये एक तरफ कपाट की तरह कार्य करते हैं। ये रक्त को केवल पेरिकार्डियल साइनस से हृदय में जाने देते हैं, वापस पीछे की ओर आने से रोकते हैं। चेंबर एक दूसरे से परस्पर इस तरह से जुड़े रहते हैं कि इनमें रक्त पीछे से आगे की तरफ ही बह सकता है। रक्त के सबसे अधिक प्रकोष्ठ से एक नलिकाकार अग्र महाधमनी, जिसे एंटीरियर अयोर्टा कहते हैं, निकल कर सिर में प्रवेश कर शीर्ष कोटर में खुलती है। शीर्ष कोटर यानी कि the sinus which is present in the head region. हृदय का प्रत्येक प्रकोष्ठ एक जोड़ी पंखे नुमा
तिकोने आकार की पेशियाँ यानी मसल्स से जुड़ा रहता है, जिन्हें एलेरी मसल्स कहते हैं। ये पेशियाँ एक तरफ तो हृदय प्रकोष्ठ यानी हार्ट चेम्बर से जुड़ी रहती हैं तथा दूसरी तरफ से प्रत्येक खंड के टर्गा से पृष्ठ तनुपट पर जुड़ी रहती है।